Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 22 of Business Mathematics MTH367. So we will continue today with the chapter number 15, which was about differentiation. So we summarized the last lecture briefly. So in the last lecture we covered section 15.1 up to 15.4. So the topics we discussed were limits, properties of limits, continuity, average rate of change, the difference quotient, the derivative, and using and interpreting the derivative. So today's topics, we will cover the following topics after starting from section 15.5. Differentiation, rules of differentiation, instantaneous rate of change interpretation, and higher order derivative. तो हमारे आज के 4 टॉपिक्स हैं और हम सेक्शन 15.5 से स्टार्ट करेंगे. Differentiation. So what is basically differentiation? So the process of finding the derivative is called differentiation. A set of rules of differentiation exists for finding the derivative of many common functions. तो derivative find करने का जो process है उसको हम differentiation कहते हैं. Derivative find करने के लिए different rule exist करते हैं. उन rules को हम study करेंगे और देखेंगे कि उनको यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाता है. So there is an alternate notation to represent the derivative of the function f at the point x. So what is one of the derivative notation is, which we studied in the last lecture, is that it is dy by dx. And so the corresponding alternate notation to this is to let f prime of x represent the derivative of the function f at x. So the relation between y and f of x is that y is the function of x. तो हम डेरिवेटिव को f प्राइम यानी उसके ऊपर एक डैश लगा के इसको हम रीड करेंगे एज f प्राइम ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं, जो कि dy by dx के मुकाबले में एक आसान नोटेशन है और एक शॉर्ट नोटेशन है. So we will also denote the derivative by this notation, which is read as f prime of x. So this is read as f prime of x. तो dy by dx या f prime of x दोनों जो हैं वो y is equal to f of x के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे. So now we study the rules of differentiation. So rule number 1 is for the constant function. So if f of x is equal to c, where c is any constant, then f prime of x is equal to 0. तो अगर आपका फंक्शन f of x जो है कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन f of x जो है इज इक्वल टू 10 है तो f प्राइम ऑफ x विल बी 0. Rule number 2 is called power rule. So if f of x is equal to x to the power n, where n is a real number, then f prime of x is equal to n x to the power n minus 1. तो अगर आपके पास फंक्शन है x to the power n तो उसका डेरिवेटिव होगा n times x to the power n minus 1. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है f of x जो कि is equal to x to the power 5 है, so f prime of x will be equal to, यहाँ पे आपके पास n जो है वो 5 है,
So n which is 5, x जो कि आपका वेरिएबल है to the power 5 minus 1. So f prime of x is equal to 5 x to the power 4. So the derivative of f of x is equal to x to the power 5 is 5 x to the power 4 by using this power rule. So a little bit of algebra flashback. So let's recall that 1 by x to the power n is equal to x to the power minus n. तो for example अगर आपके पास हो 1 by x to the power 6, तो इसको हम लिखते थे x to the power minus 6. So we need this algebra flashback in the coming rules. And also if you have nth square root of x to the power m, then this would be equal to x to the power m divided by n. For example आप ले रहे हैं x square का थर्ड स्क्वायर रूट, तो आपके पास ये बराबर होगा x to the power 2 by 3 के. So this is a little bit of algebra flashback which needed for the coming rules. So rule number 3, constant time of function. So if you have a function f of x which is equal to c times g of x, where c is a constant and g is a differentiable function, then f prime of x is equal to c dot g prime of x. So for example अगर आपके पास हो function f of x which is 6 times g of x है x to the power 4, तो f prime of x आपके पास होगा, here g of x is x to the power 4, 6 times g prime of x, and g prime of x यहाँ से है हमारे पास पावर रूल को यूज करते हुए 4 times x to the power 4 minus 1, which is by using this power rule जो अभी हमने यूज किया, तो ये हमारे पास बराबर होगा 4 times x cube. So f prime of x is equal to 6 into 4x cube. So this would be equal to 24x cube. यानी आप कांस्टेंट को बाहर लेके जो g of x है सिर्फ उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. So rule number 4, sum or difference of functions. So if you have f of x is equal to the sum of two other functions which are u of x plus minus v of x, या दो functions का difference है f of x, या फिर दो functions का sum है जो कि u of x और v of x हैं, then f prime of x is equal to u prime of x plus minus v prime of x. तो यहाँ पे अगर आपके पास दो functions हैं u v और उनका sum एक function है f of x, तो f of x का जो डेरिवेटिव होगा वो u prime of x और v prime of x का सम होगा, और अगर f of x u of x और v of x का डिफरेंस है तो f prime of x जो होगा वो u prime of x और v prime of x का डिफरेंस होगा. फॉर एग्जांपल if you have f of x is given by x cube plus x square, तो यहाँ पे आपका u of x है x cube और v of x है x square. तो पावर रूल को यूज करते हुए u प्राइम ऑफ x होगा आपका 3x square और v प्राइम ऑफ x होगा 2x. तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ x होगा basically derivative of u prime which is 3x square
प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि v ऑफ x है, तो v प्राइम ऑफ x इज 2x। तो अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन होता। सो दिस इज द सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। रूल नंबर 5। So rule number 5 is the product rule. Product rule में आपके पास f of x है जो कि दो functions का product है। So if f is a product of two functions u of x and v of x, where u and v are differentiable, then f prime of x is equal to u prime of x dot v of x plus v prime of x dot u of x. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है f of x जो कि बराबर है x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 के, तो यहाँ पे आपका u of x जो है वो होगा x स्क्वायर और v of x क्या है आपका x प्लस 1। So you need 4 terms to find f prime of x. तो आपने पास 2 टर्म्स तो हैं जो कि u of x और v of x हैं। अगर आप u prime of x फाइंड करेंगे तो u prime of x पावर रूल को यूज़ करते हुए होगा 2x to the power 2 minus 1 जो कि आपके पास 2x to the power 1 है, और v prime of x होगा आपके पास इसकी पावर 1 है 1 डॉट x to the power 1 minus 1 प्लस दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे हमने सम वाला रूल यूज़ किया है कि सम ऑफ टू फंक्शंस हो तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी x का, फिर 1 का डेरिवेटिव लेंगे और इसके बाद हमने रूल 1 यूज़ करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। सो दिस इज़ 0। सो दिस विल गिव अस 1 into x to the power 0 plus 0, or if you recall anything raised to the power 0 is also equal to 1, so this is 1 dot 1 plus 0 and this is equal to 1. So your v prime of x is 1 and your u prime of x is 2x. तो f prime of x में फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले में कीमत पुट करेंगे, तो u प्राइम ऑफ x जो है आपके पास है 2x और आपके पास जो v ऑफ x है वो है x प्लस 1 प्लस v प्राइम ऑफ x है आपके पास 1 इंटू u ऑफ x जो है वो है x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद x प्लस 1, ये होगा 2x स्क्वायर plus 2x plus x square, so this will be equal to 3x square plus 2x. So this is the f prime of x. Rule number 6. This is called the quotient rule. So if f of x is the quotient of two functions u of x and v of x, where u and v are differentiable and v of x is not equal to 0, then f prime of x is given by v of x dot u prime of x minus u of x dot v prime of x whole divided by v of x square. So let's have an example of this function. So f of x is given by 3x square minus 5 divided by 1 minus x cube. तो यहाँ पे आपके पास है u of x 3x स्क्वायर के बराबर है माइनस 5 भी उसमें है, और v of x जो है वो 1 माइनस x क्यूब के बराबर है। So you find the derivative of u of x, which is u prime of x. So using the power rule
and the constant time the function rule. This is 3 times 2 to the power x to the power 2 minus 1 minus, and the derivative of the constant function is 0, so we get 1 here. So this is 6 times x, which is x to the power 1. So now we find the derivative of v of x. So v prime of x is derivative of the constant, which is 0, minus, now we apply power rule here, 3 times x to the power 3 minus 1, this is minus 3 x square. So now we have all the values which we need to solve this example. So f prime of x को फाइंड करने के लिए पहले आप v of x लिखेंगे यहाँ पे. So you know your v of x is 1 minus x cube. उसके बाद आप लिखेंगे u prime of x, which is 6x, minus उसके बाद आप लिखेंगे u of x, which is 3x square minus 5, or into v prime of x, which is minus 3x square. So this whole divided by v of x square. So 1 minus x cube whole square. So we need to simplify this expression. So 1 minus x cube into 6x is equal to 6x minus 6x to the power 4, and from the second expression we get plus 9x to the power 4 minus 15x square, and this whole is divided by 1 minus x cube whole square. So this is equal to 9x to the power 4 minus 6x to the power 4 is 3x to the power 4 minus 15x square plus 6x divided by 1 minus x cube. So this is the answer. So this is the f prime of x. तो आपके पास अगर quotient हो दो functions का, तो उसका डेरिवेटिव आप इस तरह से फाइंड करेंगे. Additional rules of differentiation. In this section we present some additional rules of differentiation which build upon the rules of above section. तो इस सेक्शन में हम कुछ और रूल्स डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन के, जो कि प्राइमरीली पिछले रूल्स पे डिपेंड करेंगे. So if you have a function f of x which is given by has a power of some other function, so u of x to the power n, यानी अगर आपके पास फंक्शन है जो कि किसी और फंक्शन की पावर है, then the derivative of f prime of x is equal to n times u of x to the power n minus 1 dot u prime of x. So for example, if you have f of x is given by 7x to the power 4 minus 5x minus 9 whole under the root. So here you have a u of x. तो आपका जो u of x है वो है 7x to the power 4 minus 5x minus 9. तो इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए है क्योंकि इस फॉर्मूले में u प्राइम ऑफ x भी है. तो ये होगा 7 into 4 x to the power 3 minus 5 into x to the power 0 और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. सो ये होगा आपके पास 28 x cube minus 5. सो व्हाट इज योर n हेयर? जैसे कि आपको पता है जो स्क्वायर रूट होता है वो
1/2 के बराबर होता है पावर, so n is 1/2. So your f prime of x is equal to n आपका जो कि है 1/2 into u of x. आपका u of x क्या है 7x to the power 4 minus 5x minus 9 to the power n minus 1. So this is half minus 1 into u prime of x, which is 28x cube minus 5. So what we've written on the last slide is that f prime of x is equal to 1/2 7x to the power 4 minus 5x minus 9 to the power 1/2 minus 1 into 28x cube minus 5. So this is equal to 1/2 7x to the power 4 minus 5x minus 9 to the power half minus 1 का जो सम आएगा वो minus 1/2 होगा और ये होगा 28x cube minus 5, and this would be equal to 1/2 और नीचे डिवीजन में अब आ जाएगा 7x to the power 4 minus 5x minus 9 अंडर द रूट, क्योंकि नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये प्लस 1/2 हो जाएगी पावर, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 28x cube minus 5 से. So eventually your answer would be 28x cube minus 5 divided by 2 times 7x to the power 4 minus 5x minus 9 under the root. So this is your f prime of x. So this is using this rule which we just defined. So rule number 8, which is base e exponential function, यानी base e exponential functions का जो derivative है वो किस तरह से find किया जाता है. So if f of x is equal to e to the power u of x, where u is a differentiable function, then f prime of x is equal to u prime of x dot e to the power u of x. तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन हो f of x which is e to the power 5x square minus 4x हो, so how we will find the f prime of x? So here we have u of x to be 5x square minus 4x. So u prime of x, here we will use the constant time the function and also the power rule. 5 times 2x to the power 2 minus 1 minus 4 times x to the power 1 minus 1. तो ये आपके पास आएगा 10x और ये आपके पास आ जाएगा -4, क्योंकि x to the power 0 आएगा और वो 0 होगा. So now we have f prime of x which is equal to u prime of x, which is 10x minus 4 into e to the power 5x square minus 4x. So this is your derivative of a function, base e function whose exponential power is some function. So for example, if we take f of x to be just e to the power x, तो हमारे पास अब u of x क्या होगा, x होगा, and u prime of x क्या होगा, 1, जो कि बेसिकली x to the power 1 minus 1 है, तो ये बेसिकली x to the power 0 is equal to 1 है. So it means that f prime of x is equal to 1 dot e to the power x. So this is equal to e to the power x. So it means के
एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e टू द पावर x ही होता है. एंड फॉर एग्जांपल इफ यू राइट, if we take a function e to the power minus x, then this will be equal to e to the power minus x into d by dx of minus x. तो हम f प्राइम के बजाय ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. So we also need to get used to this notation. So we must not forget that f prime is actually this notation. So this is e to the power minus x और derivative of minus x क्या होगा हमारे पास -1. So अगर f हमारा e to the power minus x है तो f prime of x हमारा e to the power minus x into d by dx of minus x, which is e to the power minus x into -1. So this is minus e to the power minus x. या इसकी जो इक्विवेलेंट है उसको एक्सप्रेशन है वो है e to the power u of x into d by dx of u of x. So we must not forget this notation, which is very also important in the calculus. So rule number 9. So rule number 9 is about the natural logarithmic function. So if f of x is equal to log of some function u of x, where u is a differentiable function, then f prime of x is equal to u prime of x divided by u of x. For example, if you take f of x is equal to log of 4x square minus 16x, then what is f prime of x? f prime of x is equal to d by dx of 4x square minus 16x divided by u of x, जो कि आपके पास है 4x square minus 16x. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो है 4 into 2x to the power 2 minus 1 minus 16 into x to the power 1 minus 1. This is divided by 4x square minus 16x. So this is equal to 8x minus 16, क्योंकि 16 के साथ जो है वो x to the power 0 है जो कि 1 के बराबर है, divided by 4x square minus 16x. So we can take 4 common here. This will be 2x minus 8, और यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ होगा x square 2x rather minus 4. If you take 4 common from here, you get x square minus 4x. So we cancel out these two terms and we get 2x minus 4 divided by x square minus 4x. So if we consider another example, if f of x is log of x, यानी आपका u of x जो है वो just x है, then f prime of x क्या होगा d by dx of x divided by x, और डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1 है तो ये 1 by x. So f prime of x is, so log of x का जो डेरिवेटिव है वो 1 by x है. So rule number 10 is called chain rule. So if y is equal to f of u is a differentiable function and u is equal to g of x is a differentiable function, then dy by dx is equal to dy by du dot du by dx. अगर आपके पास y है जो कि वेरिएबल u का फंक्शन है और u जो है वो वेरिएबल x का फंक्शन है, तो आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए जो आपके पास फार्मूला होगा वो होगा dy by du dot du by dx.
So for example, you have given y is equal to f of u, which is equal to u square minus 2u plus 1, and then u is also a function of some other variable, which is rather x. So u is equal to g of x is equal to x square minus 1. So we need to find, so we want to find dy by dx. अब बेसिकली आप डेरिवेटिव तब ले सकते हैं अगर y is a function of x हो, but since you know that y तो u का फंक्शन है लेकिन u जो है वो x का फंक्शन है, यानी u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, तो बिलवास्ता तौर पे y जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है. So it means that since u depends on x and y depends on u, so it means that y also depends on x. So y can also be thought of as a function of x. So we can compute dy by dx, जो कि आपके पास होगा dy by du into du by dx. So first you compute dy by du. So dy by du होगा आपके पास 2u to the power 1 minus 1 minus 2 minus 1 2u to the power 1 minus 1 plus the derivative of constant function is always 0, so this is 0. So now you have a function x square minus 1, which is u, so you can take du by dx. So du by dx is 2x to the power 2 minus 1, and the derivative of constant function is 0. So this is equal to 2x. So we have from the last slide dy by dx is equal to dy by into du by dx. So we call this equation number 1. So from the last slides we know that dy by du is 2u minus 2, and we also know that du by dx is equal to 2x. So putting the values in 1, we get dy by dx is equal to 2u minus 2 into 2x. So now since we know that u is equal to x square minus 1, so we also replace the value of u here, and we are taking the derivative with respect to x, so that's why we want to have an answer in terms of x. तो x की टर्म्स में आंसर के लिए हमने यहाँ पे u की वैल्यू जो कि x स्क्वायर माइनस 1 थी एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको हमने यूज़ किया. So we will have here 2x square minus 2 minus 2 into 2x. So this is 2x square minus 4 into 2x, and this primarily gives us 4x cube minus 8x. So this is the dy by dx. Even though initially we have seen that y is not the function of x, यानी y जो था वो x का फंक्शन नहीं था, बट y जो था वो u का फंक्शन था और u जो था वो x का फंक्शन था. तो बिलावास्ता तौर पे जो y था वो x का भी फंक्शन था. तो हमने वी हैव अ टेक्निक जो जिसको चेन रूल कहते हैं, चेन रूल को यूज़ करते हुए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया.
और आखिर में जो उनकी वैल्यू आती है dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, उसमें आप u की जगह पे एक्सपोर्ट करेंगे, यानी जो उसका फंक्शंस है u का जो u की जगह पे उस फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है उसको पुट करेंगे। इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x होगा और वो होगा आपका dy बाई डी एक्स। सो नाउ when we defined the derivative, we mentioned that it is the instantaneous rate of change. So now basically we see the interpretation of that claim that the derivative represents the instantaneous rate of change. तो जैसा हमने मेंशन किया था कि डेरिवेटिव जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी हम एग्जांपल करेंगे जिससे हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि वाई डेरिवेटिव जो है वो एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। So consider the following example. So an object is dropped from a cliff which is 1296 feet above the ground. The height of the object is described as a function of time. So the function is h is equal to f of t, which is equal to minus 16t square plus 1296, where h is the height in feet and t equals the time measured in second from the time the object is dropped. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 1296 फीट की बुलंदी से ड्रॉप करना है। एक क्लिफ है जिसके ऊपर से हमने इसको ड्रॉप करना है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम में डिस्क्राइब की गई है और उसके लिए जो फंक्शन है वो गिवन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 16t स्क्वायर प्लस 1296। h जो है यहाँ पे हाइट इन फीट है और t जो है टाइम इन सेकंड्स है, मेजर्स फ्रॉम द टाइम द ऑब्जेक्ट इज स्टॉप, यानी जब हम ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा और उसके बाद जो फर्दर टाइम है उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ज़मीन से कम होती जाएगी। So now basically we have three questions. So part A is that how far will the object drop in 2 seconds, यानी जब ऑब्जेक्ट को उस क्लिफ के ऊपर से हमने छोड़ा है तो 2 सेकंड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ तक जाएगा। So solution A. So we know that the change in the height is f of 2 minus f of 0, यानी हाइट के अंदर जो चेंज आ गई है, पहले वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो था उसकी हाइट थी 1296 फीट। तो अब हम जो चेंज है उसको हम f of 2 माइनस f of 0 से फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज f of 2? सो द f of 2 इज गिवन बाय माइनस 16 टाइम्स 2 स्क्वायर, जो कि आपके t है वो यानी 2 है यहाँ पे, प्लस 1296, this is your f of 2 minus your f of 0, which is minus 16 times 0 plus 1296। तो ये बराबर होगा minus 16 into 4 plus 1296 minus 1296 के। So these two will cancel out and you will get minus 64 feet. So the object drops 64 feet during the first 2 seconds, यानी ऑब्जेक्ट जो है पहले 2 सेकंड्स में 64 फुट नीचे आ जाएगा। माइनस साइन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। So part B of the question asks for what is the instantaneous velocity of the object at t is equal to 2, यानी टाइम t इज इक्वल टू 2 पे उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उस फंक्शन का। तो अगर हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास आता है माइनस 32t, जो कि प्राइमरीली सिंस f of x इज माइनस 16t स्क्वायर प्लस 1296 है, तो आपके पास f प्राइम ऑफ x आएगा माइनस 16 2 to the power t to the power 2 minus 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0,
तो ये आएगा आपके पास -32t. So f prime of x is 32t. It means that what you need to find is that you need to find the I shall say f prime of t is 32t. So the object will have a velocity equal to f prime of 2. अगर टाइम 2 पे आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो आपको t की जगह पे 2 पुट करना है इस फंक्शन में. So this gives you -32 into 2, which is -64 feet per second at t is equal to 2. So the minus sign indicates the direction of velocity, which is down. तो 2 सेकंड्स के बाद उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 64 feet per second. So part C of the question asks for what is the velocity of the object at the instant it hits the ground. अब हमने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की जब ऑब्जेक्ट ज़मीन को हिट करेगा. So when will it hit the ground? Velocity. So in order to determine the velocity of the object when it hits the ground, we must know when it will hit the ground. यानी हमें उस टाइम को फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन को हिट करेगा. तो ऑब्जेक्ट जब ज़मीन को हिट करेगा तो इट मीन्स कि उसकी जो हाइट होगी ज़मीन से वो 0 होगी. तो हमने h को 0 के बराबर लेना है. सो द ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड व्हेन h इज इक्वल टू 0 और व्हेन -16t square plus 1296 is equal to 0, which basically means that 16t square is equal to 1296, and dividing both side by 16 you get t square is equal to 81. So we know that here a negative root is meaningless क्योंकि ज़ाहिर है टाइम -9 सेकंड तो हो नहीं सकता है. So basically we conclude that the object will hit the ground after 9 seconds. So it means that अगर हमने velocity find करनी है तो हम f prime को जो है वो टाइम t is equal to 9 पे evaluate करेंगे. So we know that the f prime of t is -32t. So this will be f prime of 9 is equal to -32 into 9, which is -288 feet per second. So the time traveled for this distance is 9 seconds, and when object hit the ground its velocity is 288 feet per second. So when the object hits the ground, its velocity is 288 feet per second. Of course the negative sign indicates the direction of downward motion of the object. So the next topic is the exponential growth process. So now basically revisiting the topic of exponential growth process, उसके अंदर हमने एक ख़ास किस्म की रेशो को डिस्कस किया था. तो हम देखेंगे कि how the instantaneous rate of change or derivatives is helpful in understanding this exponential growth process. The exponential growth processes were introduced in chapter number 7, and we recall that the generalized exponential growth function was presented as v is equal to f of t, which is equal to v naught into e to the power kt. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है प्राइमरीली अगर हमने इसको फाइंड किया था कि इंटरेस्ट अगर हमारी इनिशियल वैल्यू v नॉट हो और हमारा k% पर ईयर इंटरेस्ट हो उसके ऊपर, तो टाइम t के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी.
और यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट जो मुराद थी वो कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट थी। तो अगर कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट होता था उस वैल्यू पे तो हम इस फंक्शन से उसको कैलकुलेट करते थे, विच इज़ v naught e to the power kt, where v naught was basically the initial amount deposited. So we indicated that these processes are characterized by a constant percentage rate of growth, और basically इसको हम characterize करते थे percentage rate of growth से, जो कि हमारे पास क्या है k होता था हमारा percentage rate of growth. So k used to be the percentage rate of growth. So let's verify this. So first we find the derivative f prime of t. So indeed this will be equal to v naught is a constant, हमारे पास v naught constant है तो इसको हम साइड पे लिख लेंगे, और हमने कहा था कि e to the power u of x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा e to the power u of x into u prime of x. तो यहाँ पे हमारे पास 50 here is v naught e to the power kt. तो आपका f प्राइम ऑफ t क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू e to the power kt, और यहाँ पे आपका आ जाएगा k. सो यू कैन राइट इट एज v naught into k into a to the power kt. So this is the expression given here, f prime of t, and this can also be written as, of course दो कांस्टेंट है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, k times v naught into k to the e to the power kt. So we know that the derivative represents the instantaneous rate of change in the value of v with respect to a change in t. So it means that the percentage rate of change would be found by the ratio, which is instantaneous rate of change, and divided by the value of the function. तो percentage rate of change को हम find कर सकते हैं अगर हम instantaneous rate of change calculate करें और उसको value of the function से divide कर लें. So this is equal to f prime of t divided by f of t. So for this function we will have, जैसा कि हमने देखा f prime of t is k v naught e to the power kt है divided by v naught e to the power kt. So these two cancels and we have k. So we have seen that by using the instantaneous rate of change we have found the percentage rate of change, which was k, and we specified initially in the exponential growth processes. So this confirms that for an exponential growth function of the form of equation 7.9 that's actually given in the book, k represents the percentage rate of growth. So given that k is constant, the percentage rate of growth is the same for all values of t. तो percentage rate of growth जो होगा वो t की तमाम वैल्यूज के लिए सेम होगा क्योंकि k हमारे पास एक कांस्टेंट है. So higher order derivatives. तो अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही स्टडी किए हैं. सो dy by dx is also called the first order derivative, यानी इसका ऑर्डर एक है और हमने एक ही बार डेरिवेटिव लेते हैं. तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम ज़्यादा बार एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. सो व्हाट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव? सो द सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ ए फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव. At x it is denoted by either d square y by dx square or f double prime of x. So if we have f of x is equal to which is also represented as y is given by x cube, then dy by dx which is equal to f prime of x is equal to 3x to the power 3 minus 1 is equal to 3x square.
This is by power rule. So what is the double derivative? It is the second derivative, which is actually a derivative of f prime of x. So d square y by dx square, इसकी ये नोटेशन होगी बराबर होगा f double prime of x के, और ये होगा the derivative of this is d by dx of 3x square. So this would be equal to 3 into 2 into x to the power 2 minus 1, which is 6 x to the power 1. So this is equal to f double prime. तो x क्यूब का पहला डेरिवेटिव जो था वो 3x स्क्वायर है और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 6x है. So as the first derivative is a measure of the instantaneous rate of change in the value of y with respect to a change in x, the second derivative is a measure of the instantaneous rate of change in the value of the first derivative with respect to the change in x. तो जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो था बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मेजर करता था, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो कि y की वैल्यू में आता था जब हम x की वैल्यू चेंज करते थे. तो बेसिकली ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये मेजर करेगा y प्राइम ऑफ x की वैल्यू में जो इंस्टेंटेनियस चेंज आता है जब हम x की वैल्यूज को चेंज करेंगे. So described differently, the second derivative is a measure of the instantaneous rate of change in the slope with respect to a change in x. As we know कि slope जो है वो first derivative होता है, तो it means कि जो second derivative है वो slope का जो rate of change है इसको calculate करता है. So now we consider this example. So consider the function f of x is equal to minus x square. So the first and second derivatives of this function are f prime of x, which is minus 2x, and f double prime of x is equal to minus 2. So let's draw the graphs of these three functions. So we draw the rough graphs. So this is basically the graph of, roughly is the graph of f of x is equal to minus x square, and x is equal to minus 2x का जो ग्राफ है वो होगा x is equal to 0 पे हमारा y 0 है, x is equal to 1 पे इसकी वैल्यू होगी 2, x is equal to 2 पे इसकी वैल्यू होगी 4, and at x is equal to minus 1 it will have the value 2, and x is equal to minus 2 it will have the value 4. So this is basically this straight line. So this is the graph of f prime of x, which is minus 2x. And then we have the graph of f double prime of x, which is minus 2. So y is equal to minus 2 is this line. So this is the line y is equal to minus 2, and here we have minus 2. So the function f is a parabola which is concave down with the vertex at 0, 0. The slope is positive to the left of the vertex but becomes less positive as x approaches 0. And the right of the vertex, to the right of the vertex the tangent slope is negative. Becoming more negative means decreasing as x increases. So the graph of f prime indicates the value of the slope at any point of f. So primarily slope हमारा हर एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हमारी रफली ये लाइन होगी, यहाँ पे ये लाइन होगी, तो ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ. इसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये स्लोप क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. और ये नेगेटिव होता जाएगा जैसे जैसे x डिक्रीज होगा. So but we also note that the values
of f prime of x are positive but becoming less positive as x approaches 0 from the left, and f prime of x becomes more and more negative as the value of x become more and more positive. So thus the graph of f prime is consistent with our observation of the sketch of f. तो f prime की जो values positive होती हैं जैसे जैसे x नेगेटिव होता है, और जैसे जैसे x पॉजिटिव होता है तो f प्राइम ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है. तो इट मीन्स कि f प्राइम ऑफ x जो है वो बेसिकली हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हायर nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं of f denoted by f to the power n is found by differentiating the derivative of order n minus 1, that is at x f nx is d by dx f to the power n minus 1 into x. So we review today's lecture by saying that आज हमने सेक्शन 15.5 से 15.8 तक कवर किया. टॉपिक्स जो हमने पढ़े वो थे डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंटरप्रिटेशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे और हमारे टॉपिक्स ये होंगे: इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, critical points means maxima and minima, the first derivative test and the second derivative test. उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को समझा होगा. अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.